And welcome to the VM class. This is Assistant Professor Bishnu. In this class, I'm going to teach you the first writing skill of CBSE class X1 or 11th. Dear student, this is the first class of CBSE board, and in this first class, I'm going to give you and teach you the first writing skill, note making. In this class especially we are going to discuss the note making. What is the note making is actually, if anyone want to know that, and if you want to tell me something about note making, you can share your experience with me. What is the note making? Tell me, what is the note making? So dear student, now tell me, what is note making? And do you know about the note making? What is note making? Note making and note taking are two important topic. Now tell me, what is note making? Dear student, in this class, in this live class, we are specially discussed about the note making. The note making is one of the important writing skill for both the CHSC and CBSE 11th and 12th class. Dear student, note is something that is important point, and that need to be point out, or that want to take and highlight that important point. Note is one of the most important point, and if you want to highlight important point of a passage, then you have to make note of that passage. This is the note making. And another one is note taking. When in your class or in meeting or any discussions, you want to highlight the important points and take the notes of the lecture, of any conversation, of any speech. That is note taking. Note taking and note making are two important chapter. Note is one of the most important point to be noted. That means the important point. Dear student, that means we are discussing the note making, that the note is important point, and to make the note we have some important guideline to make notes, and in this class we are going to know that. Notice that notice that note the note making is one of the important study skill. Dear student, what is the note making is actually, what is important? Note making is an important study skill. It also helps us to work. It also helps us to work. We need to draw the main point of the material we read as it is. Different to remember large chunks of information. Let us begin with the example. The dear student, नोट मेकिंग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड इन दिस टॉपिक वी आर स्पेशली make note of a particular passage.
of a particular prose section of a essay. So dear student, note making is one of the important skill. Give me 1 minute, just I want to share the link to the student. Dear student, this class will be in biology bilingual session, both English to Hindi medium, because this is the CBSE course, and most of the CBSE student they are their proficiency in both Hindi, English and Hindi. So that in this class will be bilingual, and the explanation will be in the Hindi. So dear student, those are want to know more about the note making, you can go to the Google and search about the note making. And note making is one important study skill. It helps us to work when we need to draw the main point of the material. सपोज, तो जब हम किसी प्रोज पढ़ते हैं, जब किसी पैसेज को पढ़ते हैं, किसी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ जब रीडिंग करते हैं, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, ड्रॉ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, in this case we need to make note of that passage or paragraph or prose or any type of section. So that is called the note making. Note making इसको बोलते हैं जब हम किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहेंगे, किसी पैसेज का, किसी एसे का, किसी प्रोज सेक्शन का, किसी पोइट्री सेक्शन का, किसी स्टोरी या नोवेल्स या ड्रामा, कुछ भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ द नोट मेकिंग, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टोरी स्किल. इट हेल्प अस टू वर्क परफेक्टली. तो इसी को नोट मेकिंग कहते हैं. नाउ कम टू दिस पैसेज. डियर स्टूडेंट, लुक एट दिस पैसेज, एंड दिस पैसेज हैज़ some idea. You have to find out the important point and then make the note. This is the note making. तो इसको हम नोट मेकिंग कहते हैं. ये देखिए देखिए ये जो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमको कुछ आइडिया आ जाता है.
कुछ बेसिक आइडिया आ जाता है उसके अंदर कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, what who are the important point of this paragraph. We have to find out that one and just highlight it and make note. That is the note making. The important point should be note out. The important point should be note out. This is called the note making. uh, Dear student, in order to make a note perfectly, we need some guideline and we have to follow the some guideline of the note making. The first step is notice that the important information has been underlined. The important information has been underlined. Dear student, हम जब पहले नोट मेकिंग करेंगे तो उसी पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, एक बार दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो वी मस्ट हैव टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो हमको क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जितना भी है उस सबको अंडरलाइन कर देना है. बाय द वे वी कैन हाईलाइट एंड we can know that this point is the important point and this line is the important, so that we must have to underline that. In this first step we have to underline the important information. Okay, now come to the next step. Next step, step 2. स्टेप 1 में अंडरलाइन करने वाला था, स्टेप 2 में क्या है देखिए. इन द स्टेप 2 रीड द पैसेज अगेन आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चंस एंड ऑन आंसरिंग देम एज यू रीड. रीड द पैसेज अगेन आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम एज यू रीड. तो हम जब उसी पैसेज का इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसी पैसेज को पढ़ो जिसको तुम अंडरलाइन नहीं किए हो. रीड द पैसेज अगेन आस्किंग योर सेल्फ. वो पैसेज को एक बार फिर से पढ़ो और खुद को पूछो क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम एज यू रीड. तुम जहाँ पढ़ी जाओ, तुम जो पढ़े हो उसको देख के फिर से और एक बार खुद को पूछो and try to ask yourself and try to give the answer what is the passage is about. The first one is what is the passage is about peasants. जब नोट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करने के बाद क्या करोगे, उसी पॉइंट को पूछोगे, अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे. तो व्हाट इज द दिस प्रोज इज अबाउट और दिस पैसेज इज अबाउट. आस्क योरसेल्फ and answer the question also yourself. This is the second step. For example, what is the passage is about? The answer is the passage is about the peasants. And second question is where found Asia, particularly India. The answer is Asia and particularly India. And third question is origin, Himalayas. That one is the peasants that is originated in the Himalayas. And third one is times, what time. Now how time, how much time or what time, long before Indo-Gangetic plan settlement. Which group of birds, that is also the another questions. Order, gulliforms, game birds family. Fascinates. So this is the last question. So in this class, dear student, when you try to make note, the first step is the underline the important point, and the second step is the questioning yourself and answering yourself. And now come to the next step, dear student. Next step, step 3 is, what is the step 3 is about? With the help of the answer, note down the main point. With the help of the answer, ask by yourself and make the main important point. Note down the main important point. Write the points. Write the points without full form of the verbs. You have to write the information according to that question and answer. Then make it serially. The dear student,
the full form. You have to write the points without full form of the verb. verb का जो full form है उसको छोड़ के आप without full form में लिख सकते हैं. For example, the pigeons, shy birds with bright plumes found largely in Asia, especially India. That after that origin in the Himalayas and spread in China, Myanmar, South and Southeast Asia. And third one is order Villiforms, game birds, family, passionates, etc. Number of species 51. Yes, charts. So like this you have to write that one without the full form of verb. After that, notice the important notice to be point out, important point to be should be given, that important point should be note, and you have to do that accordingly. Point 1, 2 or 3 related area can be combined into one point. 2 or 3 related idea, कोई किसी पैराग्राफ में अगर 2 और 3 रिलेटेड आइडिया है तो आपको क्या करना है, उसी को एक ही आइडिया में लिखना पड़ेगा, एक ही पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, कॉम्बाइन इनटू वन पॉइंट. अगर 2-3 आइडिया एक ही सेम सिमिलरिटी है, रिलेटेड है, तो यू मस्ट हैव टू राइट इनटू वन पॉइंट ओनली. एंड अदरवाइज यूज ऑफ कॉलम्स, यूज ऑफ कॉलम्स तो कुछ कॉलम्स को यूज करना पड़ेगा. यूज ऑफ द लॉन्ग डेक्स, तब आप क्या करोगे, कुछ जगह में यूज ऑफ लॉन्ग डेक्स को यूज करना पड़ेगा. आफ्टर दैट नाउ कम टू द स्टेप 4. स्टेप 4 सेज दैट नाउ गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम. गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम. Go over the facts and number them. This is only to analyze the process of note making with the practice of, this is the important point, practice. You will be able to read step 4 immediately, going through step 2 and step 3 mentally. Now come to next point. Next step is step 5. Step 5 says that finally we go over the facts and number them again. Read carefully the characteristics of good notes which are given below. So finally we can go over the facts and number them again. Remember, read carefully the characteristics of good notes which are given below. तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह दिया गया है, फाइनली वी गो ओवर द फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स दिया है, नंबर दिया गया है, उसको अगेन एंड अगेन पढ़ने के बाद रीड केयरफुली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स व्हिच आर गिवन बिलो. तो हम उसके बाद गुड नोट करने के लिए क्या क्या पॉइंट को, कौन कौन सा पॉइंट को इम्पोर्टेंट देंगे, तो उसको हम करेंगे. तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है. पॉइंट नंबर 1, नोट शुड बी शॉर्ट. दे शुड बी आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. द नोट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड दे शुड बी आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. सेकेंड पॉइंट इज द लीस्ट इंफॉर्मेशन इन व्हाट इज कॉल्ड नोट फॉर्म्स. The least information is what is called note form. And the third point is they are written only in Shakespeare, not sentence. That is only written in the phrases. That the note should be written in phrases, not in sentence. And the second point is the information is logically divided and subdivided. The information is logically divided and subdivided. The information should be logically divided and
subdivided by the use of figures or letters. The point 2, the division are made like this. The division are made like this. Point 2, the division are made like this. Main section 1, 2, 3, etc. Subsection I, double I, triple I, etc. Sub subsection, subsection A, B, C, D, etc. And another point is another comment another common method is the decimal system. Main section 1 to 3, etc. Subsection 1.1, 1.2, 1.3, etc. Subsection 1.1, 1, 1.1, 2, 1.1, 3, 1.2, 1, 1.2, 2, 1.2.2, etc. Now come to the next point 4. The abbreviation and the abbreviation and symbols are freely used. Articles, preparations, and conjunction are omitted. The important point, the important point, abbreviations and symbols are freely used. Abbreviation and symbols are freely used. You can use the abbreviation and symbols, but you cannot use articles. Articles, preposition, and conjunctions are omitted. You cannot use articles, preposition, and conjunction in the note making. Now come to the now read the following text. The energy stored in coal and petroleum originally come to the earth from the sun. The bulk of the present day supplies was laid down some 2000 to 6000 million years ago when the tropical conditions were widespread. Loose swampy forest produce huge trees, worms, coastal seas, one with microscopic forms of life. When these organisms die, such much of their tissue was recycled as it is today through caving and decay. But it seems significantly amount of the dead, that is very decompositions. Like that, this is the important uh, paragraph. And now the instruction is given for note making. Underline the important word and phrases. The the point is saying that underline the important words and phrases. And point 2, write down points without fully expanded verbs. पॉइंट 1 में क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है. पॉइंट 2 में क्या करना है, राइट डाउन पॉइंट्स विदाउट फुली एक्सपांडेड वर्ब्स. वर्ब्स का फुल फॉर्म में ना लिख के हाफ फॉर्म में लिखना है. अब पॉइंट 3, कंबाइन रिलेटेड पॉइंट्स. जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स है उसको कंबाइन करके एक ही पॉइंट में लिखना है. पॉइंट 4, ग्रुप रिलेटेड पॉइंट्स. जितने भी रिलेटेड पॉइंट है उसको एक ही ग्रुप में रखना है. पॉइंट 5, change the verbs in noun and begins point with them. Change the verbs to noun. जितने भी verbs है उसको noun form में change करना है. and begins points with them. and begins point with them, उसको लेके points लिखना है. point 6, number the point. जितने भी point है उसको number करना है. after you have finished the check with the notes given below. तो उस सब होने के बाद नोट कैसा होगा देखिए. नोट ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया है. दिस इज द पॉइंट. स्टोर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज कोल एंड पेट्रोलियम. डिपॉजिट ऑफ बुल्क ऑफ सप्लाइज 200 to 600 million years ago. Teeming life in tropical conditions. Death of life in tropical condition. Dear student, you can write this note and make this note like this. Now come to the next.
and this is the last one, and through this you can write the and you can make the notes perfectly. Dear student, in this note making class, I hope, I think, and I hope you can understand something, because note making is one of the most important study skill, and uh, this can help you to grow, enlarge your idea, and you can follow the 5 step or 5 to 6 step, and you can make the note. Now I want to revise once again the note making. Note making is one of the important study skill. It also help us to work. It also help us to work. We need to draw the main important point. You need to draw the main point of the material we read, as it is different to remember large chunks of information. जैसे कि एक ही पैसेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, देता है, तो उसको हम समझने के लिए, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करने के लिए, वी मस्ट हैव टू chunk it into different parts, and we can underline the most important point, then you can write, and you can omit article abbreviations and article preposition abbreviation, उसको हम छोड़ के वर्ब को फुल फॉर्म में ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख के हम वर्ब को नाउन फॉर्म में भी चेंज करके कर सकते हैं. तो ऐसे करके हम नोट मेकिंग कर सकते हैं. चलिए मैं वो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट मेकिंग के लिए दिया गया है, स्टेप 1 देखिए. स्टेप 1 को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. स्टेप लाइन देखिए. हम कोई भी पैसेज दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको फिर वो पॉइंट को हम क्या करेंगे. स्टेप 1 जितने भी स्टेप दिया है, स्टेप में बोला है कि नोटिस दैट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अंडरलाइन. नोटिस दैट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अंडरलाइन. जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमको अंडरलाइन करना है. उसको हमको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करने के बाद हम उसी को हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे. अंडरलाइन करने के बाद हम देखेंगे. नेक्स्ट another point is, another second step is, and the second step is read the passage again asking yourself. तो पैसेज को पढ़ने के बाद आप खुद को क्वेश्चन पूछो और आंसर भी खुद ही दो, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा. तो नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट 3 में क्या करना है स्टूडेंट. राइट द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द आंसर नोट डाउन द मेन पॉइंट्स. जो जो आंसर निकला है वो सब आंसर को देख के आपको क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना है. उसके बाद नाउ नोटिस में आ जाते हैं. इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी नोटिस में रखना है. 2 और 3 रिलेटेड आइडिया जब जहीं पे रहेगा तो उसको कंबाइन करके 1 पॉइंट में करना है. उसके बाद यूज ऑफ कॉलम्स. जितने भी जहाँ पे कॉलम्स चाहिए उसको कॉलम यूज करना है. यूज ऑफ लॉन्ग डेक्स. यूज कॉलम्स मतलब जितने भी कॉलम्स वगैरह कॉमा वगैरह जो जो रहता है उसको यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है. यूज ऑफ लॉन्ग डेक्स. जहाँ पे लॉन्ग डेक्स का ज़रूरी है उसको हम यूज करेंगे. उसके बाद स्टेप 4 में जाएंगे. स्टेप 4 में क्या पूछा है. नाउ गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम. गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम. दिस इज ओनली टू द एनालाइज द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग. तो उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्स और नंबर वो हमको देना पड़ेगा. इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और नंबर देना पड़ेगा. पॉइंट 4 में. पॉइंट 5 में क्या करना है, फाइनली वी गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम अगेन. उसके बाद फैक्ट एंड नंबर हमको फिर से देना है. नंबर कैसे देना है देखिए.
इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम 1 to 3 में लिख सकते हैं। उसके बाद मेन सेक्शन को 1 to 3 में लिखेंगे। सब सेक्शन को I, II, III ब्रैकेट में रख के लिखेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद अनदर कमांड हम करेंगे। ये सब सब सेक्शन सेक्शन मेन पॉइंट को हम सेक्शनाइज करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारा एब्रीविएशन जितने भी है, एब्रीविएशन सिम्टम्स को हम लगा सकते हैं, बट फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन, वी कैन नॉट यूज दिस वन। इस सब को हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद पॉइंट 5 में दिया है नोट मस्ट मेक सेंस। नोट मस्ट मेक सेंस, दे आर रीड अगेन, अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज। अदरवाइज दे विल बी नो ऑफ नो यूज। आपको उसी हिसाब से करना है, नहीं तो आपको मतलब नोट मस्ट मेक सेंस व्हेन दे आर रीड अगेन, अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज। उसी जैसे पैराग्राफ दिया है उसी हिसाब से अगर नहीं रहेगा तो आपका यूज में कुछ भी नहीं आएगा, और देर विल बी नो यूज। So dear student, I hope the note making will be very helpful to you, and I hope that this is the first class of CBSE 11, and I hope that this class will be very helpful to you. And if you are the new student, if you are the new viewer of my channel, please like, share and subscribe my channel, and to update with me, to cooperate with me. Thank you for watching. See you in the next class, see you in the next video. Thank you everyone, thank you so much.